हाय, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे पाइथन और एचटीएमएल कोड को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग रेंडम टेम्पलेट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे पाइथन के वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं विद इन एचटीएमएल। सो सबसे इजीएस्ट वे बताता हूँ। लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। सो इफ आई से नेम इक्वल्स टू, सो आप अगर चाहते हो ये वेरिएबल जो है आप डैशबोर्ड पे यूज करना चाहें, यूजर नेम इज नेम, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द नेम। ओके, फर्स्ट थिंग, जब भी आप HTML के अंदर उसको एक्सेस करोगे यू हैव टू से डबल कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो दैट विल मेक इट अ वेरिएबल। ठीक है, पहली चीज तो ये रहेगी। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा एज अ नेम। तो अगर हम अभी देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पाइथन का जो कोड है, पाइथन का जो वेरिएबल है, हम उसको पास कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमारा dashboard.html है उसको यूज कर पाएगा। एंड dashboard.html पे हम उसको डबल कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, let's try to run this and see how it works. I want to say simply python main.py and it start working. मैं ब्राउजर इसको ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे क्विकली। और आप होम पेज पे आ गए। Let's go to the dashboard and you can see username is updated from Python. If you want to change it to something, maybe you want to change it to something else, you can also do that. Okay? अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपका इस डैशबोर्ड के अंदर भी वो चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज टेकिंग फ्रॉम हियर। अगर आप चाहते हो कि देयर इज अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल इट्स नॉट अ नेम बट इट इज नेम्स। Example, we have 3 names here, and instead of name, what we are doing, we are passing in names. Okay, and हम यहाँ पे names print करते हैं। So you'll see, अगर मैं वापस से रन करता हूँ कोड and we are already opening it in browser, you'll see we are getting a list. But अगर आपको चाहिए कि आप इसको specifically HTML की list में you want to mention it, so what you can do is, first of all, what I'll do is I'll create a UL unordered list and then I will create a loop. Okay, loop करने के लिए you have to do this way. You'll say for item in names. Okay, and then the one thing जो कि आप normally Python में नहीं करते, you have to say and for, otherwise it will not work. So अब यहाँ पे you can do anything, वो loop में चलेगा। So let me say li list item and then I'll say item. ठीक है, जो ये हम item है अब उसको हम as a variable access कर रहे हैं। So let's see how it works. Let me quickly go here and then it is already working and let's go here and then see how it works. So now हमारे पास ये as a list we are getting it. ठीक है, so this is how you usually use loops. Okay, there are other things as well. You can also use conditions. So if you want to use condition, you can simply use the same way, but you have to say if condition, जो भी आपकी condition होगी, you can use it here and then you also have to say and if. So that's how condition works. जो भी condition यहाँ पे रहेगी that would be true and you can also use else या फिर elif. You can also use those things as well. So that's how conditions work, that's how loop work, and this is how your normal variable works. Okay, so for example, अगर आप condition का example देना चाहो तो let's say condition equals to false, and if I go back here and I'll say if condition, then I'll say condition is true, else I'll say condition is false. अगर आप इस तरीके से कुछ करते हो you'll say condition is false because ये condition हमारी मैच नहीं करी, because condition हमारी false थी। So this was the last video on basic concepts. जो next चीज रहेगी, we will start building the website from scratch. Okay,